Start. So basically, what in this particular chapter we will understand what is we have already seen what is democracy, right? Or democracy, how it accommodates diversity, right? And if it is not ready to accommodate the diversity, how I mean the way it pays, right? Okay, so ये सब इस चैप्टर में दिया हुआ है, थोड़े बहुत एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने देख रखे हैं, तो उसका बस एक रेफरेंस लेंगे हम लोग, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, राइट? तो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी में जैसे एक तो लैंग्वेज के बारे में देख रखा है, जैसे लैंग्वेज वाला केस हमने देखा था श्रीलंका में, राइट? कि सीला पीपल लोग थे और आपके क्या थे, तमिल थे, राइट? और उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनिशियली। सीला आई मीन स्पीकिंग पीपल दे वर नॉट रेडी टू एकोमोडेट, राइट, the concern of Tamil people, right? And because of that, there was a bloody civil war in Sri Lanka, right? You all know about that. Okay. So that is what language, that is what distinct identity. Religion, you can say, yes, there are multiple examples. Now, if you talk about, other distinct identity, ये तो हमने अभी तक देखा है, रिलीजन के बेस पे हमने देखा था, राइट? ठीक है ना? रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे हमने देखा था। एक तो हमने लैंग्वेज के बेस पे देखा था, राइट? ठीक है ना? कि दैट इज व्हाट द दिस एग्जांपल ऑफ व्हाट श्रीलंका। रिलीजन के बेस पे देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, राइट? यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन मिडल ईस्ट, you can say, right? Or the conflict in between Saudi Arabia and Iran, right? Okay. Or there are many examples, right? So now the other thing is also what that also comes under what different identity, like class, right? Rich or poor. Religion, that is already we have taken. Gender, right? Like male and female, right? Caste, Ariji. So caste, right? And caste is it's a it's very peculiar to India, right? Tribes, तो ये सब हम लोग देखेंगे, थोड़ा बहुत जेंडर के बारे में देखेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, कास्ट के बारे में देखेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में इसको हम लोग हॉलिस्टिकली एक बार स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि अगर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, राइट, तो डेमोक्रेसी उन आइडेंटिटीज़ को कैसे प्रिजर्व करती है, उनको कैसे वॉइस देती है ताकि उनका भी एग्जिस्टेंस बना रहे, राइट? ठीक है ना? So that is what the line written, that how democracy responds to what social differences, divisions, and what inequalities, right? Okay. Now maybe you have seen this just I think 1 year 2 months before, right? I think जून के आसपास अगर 2020 देखो तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, राइट? ब्लैक लाइव्स मैटर, justice for George Floyd, right? So he is George Floyd, right? And unfortunately, he was killed, right, by this particular policeman. Or that means what? Ki there was some kind of discrimination against what blacks, right, in USA. In fact, it is there. अभी भी है अगर तुम देखोगे तो, राइट? सो देर इज वॉट डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट इज गोइंग ऑन, राइट? हाँ, ऑब्वियसली दैट डिस्क्रिमिनेशन डिक्रीज्ड पोस्ट 1970s, यू कैन से अ लॉट, बट 1970s तक तो बहुत, मतलब इट वॉज इन अ वेरी गुड, आई मीन इट वॉज एट अ वेरी गुड लेवल, आई मीन गुड वर्ड, आई विल नॉट चूज द गुड वर्ड, राइट? मतलब ये ठीक ठाक एक एक्सटेंट तक था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक इन यूएस, आई एम टॉकिंग, राइट? ठीक है? सो दिस इज वॉट अगेन यू कैन से दिस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉट रेस, राइट? तो अब एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जिससे आपके एनटीएससी में क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो फर्स्ट, एक ग्लॉसरी में एक साइड में अगर तुम देखोगे, राइट, तो देयर इट इज रिटन सिविल राइट्स मूवमेंट। सो दैट सिविल राइट्स मूवमेंट, द ईयर वाज व्हाट 1954 to 1968, राइट? ठीक है? एंड व्हाट वाज दैट? तो ये जो मूवमेंट था, दैट इज व्हाट अ सेट ऑफ इवेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स एम्ड एट एबॉलिशिंग लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स, राइट? ठीक है? सो दिस इज व्हाट, और इनको जो लीड किया था, किन्होंने लीड किया था, तो इट वाज लेड बाय व्हाट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, राइट? And he was assassinated in 1968, right? So this movement went from 1954 to 1968, assassinated. और अगर तुम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में आप पढ़ोगे, राइट, ठीक है ना, assassinated in 1968, right? So he was very much influenced by this non-violence concept, right? गांधी जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, तो उनका भी यही था कि उन्होंने भी एक नॉन वायलेंट तरीका ही अपनाया सिविल राइट मूवमेंट्स को लीड करने में, राइट? सो इट वाज अ कम्प्लीटली, यू कैन से, इट वाज काइंड ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट। बट इसी में एक सेक्शन ऐसा था जिसमें एक पढ़ोगे मालकम एक्स का नाम, राइट? ठीक है ना?
Malcolm X. Not important to remember the name, right? So Malcolm X actually, he was not in favor, right? He was not in favor of these. I mean this nature of this movement, right? तो उनको लगता था कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है जिन्होंने ये मूवमेंट लीड कर रहे हैं, राइट, ठीक है ना, ही वाज लीडिंग दैट मूवमेंट एंड द वे ही इज लीडिंग दैट इज व्हाट द नॉन वायलेंट अप्रोच. मैल्कम एक्स, उससे उनका जो ओपिनियन था दैट वाज ही हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट राइट. तो मैल्कम एक्स के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने यहाँ पे एक मूवमेंट दैट इज व्हाट योर ब्लैक पावर मूवमेंट, राइट, स्टार्ट किया. ये भी इसी से कनेक्टेड है, सिविल राइट्स मूवमेंट से ही कनेक्टेड है. यू विल सी द ईयर, द ईयर इज ऑलमोस्ट 1966 to 1975, राइट. सो ब्लैक पावर मूवमेंट क्या था बेसिकली, इट वॉज अ वायलेंट मूवमेंट, राइट, ठीक है ना. सो इट वॉज अ एंटी रेसिस्ट मूवमेंट, राइट, एंड मोर मिलिटेंट, राइट. दैट मीन्स वॉट, advocating even violence, and who, the followers of Malcolm X, right. And this movement uh, accelerate हुआ in 1966 again after the assassination of Malcolm X, right. Okay, so these two are the movements which you should know, which you should remember. Question can come, civil right movement क्या है, it was led by whom, right. The black power movement क्या है, or whether it was violent movement or non-violent movement, like that. And who is Afro-American community. So they are basically what blacks, right, जो 17th से 19th सेंचुरी में अफ्रीका से अमेरिका ला गए थे, राइट, ठीक है ना. अमेरिका तो वैसे तो इट्स व्हाट नॉर्थ अमेरिका, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, राइट, ठीक है. तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, सो दैट्स व्हाट, जिनको अमेरिका लाया गया था, तो दे आर व्हाट एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी इन व्हाट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट, ठीक है, जिनके खिलाफ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था. सो दिस वाज द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, राइट. एंड व्हाट हैपेंड, how America or American democracy actually tackled with this particular discrimination. So they gave the voice actually to these people, to the black people. If you see, the condition is much more improved nowadays, right, in America. If you talk about the black people, right, जैसे इनका जब डेथ हुआ था, ऑब्वियसली गया तो नहीं है, कुछ लोग तो उस तरह का उनके अंदर एक थॉट प्रोसेस है, दैट इज व्हाट दे आर वाइट सुप्रीमेसिस्ट, राइट, ठीक है ना. सो दैट प्रोसेस, आई मीन दैट थॉट प्रोसेस स्टिल एग्जिस्ट इन सम माइंड्स, and that was the reason he was killed, right. Okay, but you see in the protest, you will see many white people also participated in the protest, right. So that is what justice for George Floyd or Black Lives Matter, right. तो ये ध्यान में रखो. दिस मूवमेंट यूपी में थोड़ा बहुत इधर उधर से एनटीएससी स्टेज 1 में क्वेश्चन आ जाता है, इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में था मूवमेंट. सो मे बी दे कैन आस्क, राइट, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, लाइक दैट. ओके, वैसे तो ये ग्लोबली था मूवमेंट, राइट, बट इट वॉज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन यूएसए एंड पिक्ड और एक्सेलरेटेड आफ्टर द डेथ ऑफ वॉट जॉर्ज फ्लॉयड, राइट. नेक्स्ट एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, राइट. तो वो ओरिजिन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज वॉट बाई बर्थ एंड द सेकेंड वन इज वॉट बाई चॉइस. तो बाई बर्थ में जैसे सेक्स ले सकते हो, मेल एंड फीमेल, कॉम्प्लेक्शंस ले सकते हो. रिलीजन को तुम वैसे एनसीईआरटी बाई चॉइस बोलती है, मुझे लगता है इन इंडिया बेसिकली व्हाट इट इज़ बाय बर्थ, राइट, रिलीजन एंड कास्ट. ओके, मोस्ट ऑफ यू, इवन आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, राइट, बट अगर तुम देखो तो अभी भी क्या है, फॉर्म भरते हो तो उसमें पूछा जाता है, राइट, यू हैव टू टिक समवेयर, राइट, ओके, दैट दिस इज योर रिलीजन, राइट. तो दैट इज व्हाट कि बाय बर्थ बोल सकते हो रिलीजन. एनसीईआरटी सेज बाय चॉइस, सो फॉलो दैट वॉट एवर एनसीईआरटी इज सेइंग. ओके, सेक्स भी वैसे तो अब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है, यू कैन चेंज योर सेक्स ऑल्सो, राइट. सो दैट इज ऑल्सो यू कैन पुट सेक्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बाई चॉइस राइट नाउ. ओके, एनीवे, सो दिस इज व्हाट द ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, दैट इज व्हाट सेक्स. जैसे सोशल डिफरेंसेस मतलब क्या, जैसे मेल और फीमेल में देयर इज अ डेफिनेटली डिफरेंस, राइट. मे बी यू हैव एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो, राइट. ओके, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी which where such kind of differences are quite prevalent, right. Complexions, तुम देखो अभी बहुत थोड़े दिन पहले एक मूवमेंट चला था, राइट. सो फेयर एंड लवली, आई थिंक वो एक क्रीम आती थी, उन्होंने अपना नाम शायद चेंज किया है, राइट, ठीक है ना. तो उसमें एक वर्ड है फेयर, और इस तरह से मतलब प्रोजेक्ट भी किया जाता था कि मतलब गोरा, मतलब गोरापन एक तरह से, कि दैट इज़ व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी. डेफिनेटली दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, राइट, ठीक है ना. सो दैट इज़ व्हाट complexion you can say, and on the basis of that we discriminate people, right, we discriminate in our society.
बाय चॉइस में अथिज्म देख सकते हो. Atheism, there are three words, right? That is what one is what atheism, one is what theism, and one is what agnosticism, right? So, what is the difference between these three words? Atheism means what? Does God exist? No. The answer is clear cut no, right? Atheist, they know that God doesn't exist, right? Theist, they say yes, God exists, and agnostics जो होते हैं, they say I'm not sure, right? ठीक है ना? So they are not sure whether it exists or not, God exists or not. अगर आप उनको जाके बोल दो अच्छा, if you give them proof, definitely they will become what? Theist after that proof, right? So that is what three division. So these are the social differences, right? Okay. Now इसमें से कुछ social differences को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. नाउ एनसीईआरटी दो और टर्म्स यूज करती है, दैट इज व्हाट? ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, राइट? ठीक है. तो उन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं. फर्स्ट एक एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, राइट? एनीबडी नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड किंगडम? देयर आर थ्री वर्ड्स विच वी यूज. यूनाइटेड किंगडम, राइट? ग्रेट ब्रिटेन, okay, and England. Is there any difference between these three words or they are same? Yeah, go ahead, Shaurya, please. Yeah, please go ahead, Shaurya. Um, yes. Yes, yes, you are correct except one place. I think या फिर शायद मैंने ढंग से देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट? गुड. देखो, इंग्लैंड, इंग्लैंड, राइट? इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, राइट? Right. England, Wales, and Scotland, they are basically what? Great Britain. वो ग्रेट ब्रिटेन है. ओके. एंड अगर उसी में तुम नॉर्दर्न आयरलैंड ऐड कर दो, नॉर्दर्न आयरलैंड, so then it will become what? Your United Kingdom, right? United Kingdom, right? And Ireland is a different country, right? ठीक है. So you see here basically what? That this is what your, यहाँ पे अगर तुम देखोगे मैप में, this is what, यहाँ पे कुछ वेल्स है, this is what your वेल्स. इस साइड आपका इंग्लैंड है, राइट? ये आपका इंग्लैंड है और ऊपर में स्कॉटलैंड है, राइट? ठीक है ना? स्कॉटलैंड है. मे बी अभी ब्रेग्जिट का नाम तुमने खूब सुना होगा, राइट? ठीक है ना? तो ब्रेग्जिट में उसमें तुमने स्कॉट एग्जिट, कुछ लोग स्कॉटलैंड के लोग भी बोल रहे थे कि यू नो वी शुड गेट सेपरेटेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेल्स, लाइक दैट, राइट? सो दिस इज व्हाट दीज आर थ्री. और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको तुम बोल सकते हो ग्रेट ब्रिटेन, और उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड ऐड कर दो, दैट विल बिकम व्हाट? योर यूनाइटेड किंगडम, राइट? Anyway, so now see, in the NCERT there are two, I mean they have explained this overlapping and cross-cutting differences with the help of two examples, and we will understand. It's very simple. The first example they have taken what? Northern Ireland, right? That is what here. Okay, so this is what your Northern Ireland. अब Northern Ireland में क्या है बेसिकली? देखो, यहाँ भी क्रिश्चियन है, यहाँ भी क्रिश्चियन है, राइट? नीदरलैंड में भी, राइट? नीदरलैंड इज हियर, राइट? ओके, दिस इज व्हाट हियर इन द मैप. अगर तुम देखोगे तो ये, राइट? सो दिस व्हाट योर नीदरलैंड, राइट? सो इधर लिख देता हूँ मैं, इंग्लैंड. तो उन्होंने दो एग्जाम्पल लिए, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड. क्रिश्चियन, क्रिश्चियन में भी यहाँ पे क्या है? कैथोलिक्स हैं एंड दे आर व्हाट? प्रोटेस्टेंट्स. नीदरलैंड में भी कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं, राइट? बट द डिफरेंस व्हाट हियर, एक तो रिलीजियस डिफरेंस हो गया, राइट? रिलीजियस डिफरेंस, कैथोलिक एंड व्हाट? प्रोटेस्टेंट. Even in case of Netherlands, the difference is there, Catholic and Protestant, right? But now, if you talk about the class difference, right? So there is a difference between these two countries, right?
So the first is what your, if you see in Northern Ireland, basically what Catholics are poor and Protestants are what rich. In case of Netherlands, both poor and rich belongs to both the community, right? Catholics as well as what Protestant, right? Okay. So that means what here you can see that class and religion tend to cut across each other, right? So that is known as what your cross-cutting differences. Okay. But and that is what less dangerous, or you can say not at all dangerous, right? But if you talk about Northern Ireland, right, there it is what Catholics are poor. That means what if you see the class difference, तो यहाँ पे Catholics religion difference और class difference they are what overlapping each other, and that can be very dangerous for a democracy, right? ठीक है ना? So that is what एनसीईआरटी कहती है कि इसकी वजह से अगर आप देखो यहाँ पे जो differences हैं and which differences basically what that differences is overlapping, right? So that overlapping differences actually created communal tension in what Northern Ireland, right? ठीक है ना? और बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए मूवमेंट्स चले लाइक दैट, राइट? बट सच टाइप ऑफ मूवमेंट वॉज नॉट देयर इन नीदरलैंड because here basically what the difference was cross cutting, means what some of the poor from Protestant also, some of the poor from Catholic also, some of the rich from Protestant also, some of the rich from Catholic also. That was not the case in case of what Northern Ireland, right? So ये ध्यान में रखना, NCERT says again what they say, see here, that social division takes place when some social differences overlap with other differences, right? ठीक है ना? And that is what very dangerous for a democracy, right? Like in case of India, you can say here if you will see most of the marginalized society, I mean they belongs to what SC/ST caste, right? Scheduled caste and scheduled tribes, right? So they are caste wise division तो हो ही गया, plus they are also what poor also, right? And that's why you will see lot of movement that is going on, right? ठीक है, काफ़ी जगह प्रोटेस्ट वगैरह सुनोगे कि हो रहे हैं, राइट? ठीक है, स्टिल इंडिया में ये चीज़ इतनी ज़्यादा उस लेवल पे नहीं गई है, राइट? मतलब इतना ज़्यादा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट अभी भी नहीं हुआ है, राइट? ओके, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट रीज़न, राइट? बट अगर तुम बात करो आयरलैंड की, राइट, सो हियर बेसिकली व्हाट दैट कॉन्फ्लिक्ट दैट बिकेम व्हाट वायलेंट लेटर ऑन. फिर क्या हुआ कि उनके जो कंसर्न्स थे उनको सुना गया, राइट? ठीक है ना? एंड देन एवरीथिंग बिकेम फाइन इन नॉर्दर्न आयरलैंड ऑल्सो, बट देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? बट नीदरलैंड में ऐसा नहीं हुआ. सो दिस इज वॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें ध्यान में रखना है, वॉट इज ओवरलैपिंग डिफरेंसेज एंड वॉट इज वॉट क्रॉस कटिंग डिफरेंसेज. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट? ओके, एंड विच इज डेंजरस, विच इज मोर डेंजरस, राइट? ओवरलैपिंग डिफरेंसेज. प्रोटेस्टेंट और जो तुम्हारे कैथोलिक्स होते हैं उनमें जो डिफरेंस है, बस एक सिंपल सा डिफरेंस याद रखो. प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली जो पोप की जो एक तरह से सुप्रीमेसी है, राइट? सो दे डू नॉट what follow the doctrine of what papal supremacy, that means what pope, right? Okay, वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना? सो बेसिकली what they are what Protestants, right? So this is what the एक बार पढ़ लेना इसको, इसमें ज़्यादा कुछ तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. वन इज वॉट योर होमोजिनस सोसाइटी. होमोजिनस सोसाइटी मीन्स वॉट दे आर बेसिकली वॉट ऑल द पीपल आर सेम, राइट? ओके, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लाइक दैट, राइट? वैसे तो ट्रूली होमोजिनस सोसाइटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती इन द वर्ल्ड में, बट अगर तुम क्लोजली जाके देखोगे, सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स. वन इज वॉट जापानीज सोसाइटी एंड वन इज वॉट योर चाइनीज सोसाइटी, विच यू कैन से दैट इट इज़ वॉट होमोजिनस सोसाइटी. मतलब इट टेंड्स टू वॉट होमोजिनस सोसाइटी. एग्जैक्ट होमोजिनस सोसाइटी तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती वर्ल्ड में, राइट? एंड माइग्रेंट वर्ड आई होप यू नो, राइट? ओके, सो दिस इज द मैप. इफ यू सी इन द मैप, राइट, यू सी हियर आयरलैंड, राइट? एंड आयरलैंड में क्या है? मोर कैथोलिक दैन प्रोटेस्टेंट, राइट? आयरलैंड में तुम्हारे मोर कैथोलिक दैन प्रोटेस्टेंट है. और अगर तुम यूके में देखो, राइट, सो हियर इट इज़ वॉट मोर प्रोटेस्टेंट दैन वॉट कैथोलिक, राइट? सो नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग थे, राइट, जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, एक्चुअली वी विल सी दैट नेशनलिस्ट मूवमेंट चला नॉर्दर्न आयरलैंड में. तो नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या था, हमने देखा था कि बेसिकली वॉट वहाँ पे कैथोलिक्स कम है एंड प्रोटेस्टेंट क्या है? ज़्यादा है, राइट? प्रोटेस्टेंट आर इन मेजोरिटी इन वॉट नॉर्दर्न आयरलैंड, एंड इन आयरलैंड कैथोलिक्स आर इन मेजोरिटी, राइट? ओके, एंड देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वॉट कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, मतलब उनका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, राइट? ठीक है ना? ओके, सो
जो नॉर्दर्न आयरलैंड में जो कुछ लोग थे, राइट, वो ऐसा मानते थे कि क्या होना चाहिए, नॉर्दर्न आयरलैंड को आयरलैंड के साथ क्या मिला देना चाहिए, राइट, ठीक है ना। सो उसी के फेवर में उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, राइट। दैट मूवमेंट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल, राइट, ओके। एनीवे, so that was the case. If you see, it is written somewhere here in the NCRT that if you see Northern Ireland, its population is divided into two major sects. One is what 53% are what Protestants, and 44% are what Roman Catholics, right? Okay. The Catholics were represented by nationalist parties who demanded the Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland, a predominantly Catholic country, right? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, राइट, स्टेटमेंट बेस्ड, राइट। The Protestants were represented by unionists who wanted to remain with the UK. तो एक यूनियनिस्ट थे और एक क्या थे, नेशनलिस्ट थे, राइट, ठीक है ना। ऑब्वियसली प्रोटेस्टेंट यूके के साथ रहना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्टेंट क्या है, मेजोरिटी में, राइट, ठीक है ना। और जो तुम्हारे नेशनलिस्ट थे वो कैथोलिक्स हैं, सो दे वांटेड टू गो विथ व्हाट, आयरलैंड वेयर एक्चुअली कैथोलिक्स आर इन व्हाट, मेजोरिटी, राइट, ओके। तो वहाँ पे वही वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस, मिलिटेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वेर किल्ड, राइट। और 1998 में क्या हुआ, यूके गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट रीच अ पीस ट्रीटी, राइट, ओके। एंड आफ्टर विच व्हाट हैपेंड, द लेटर सस्पेंडेड देयर आर्म्ड स्ट्रगल, राइट। तो ये आयरलैंड की कहानी थी, नॉर्दर्न आयरलैंड की। बट इफ़ यू टॉक अबाउट यूगोस्लाविया, वहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ था। डिटेल हिस्ट्री हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट यूगोस्लाविया एक्चुअली व्हाट, डिसइंटीग्रेटेड, लाइक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, यूगोस्लाविया ऑल्सो डिसइंटीग्रेटेड, राइट, ठीक है ना। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू व्हाट, 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो बस ये तुम 6 याद रखो। वैसे मैंने यहाँ पे दे दिया लिस्ट वगैरह, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी कंट्रीज बनी थी। जस्ट रिमेंबर दैट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, राइट, गुड। Yes, I mean Bosnia and Croatia. Even see, this is what Slovenia हो गया तुम्हारा, Croatia हो गया, Bosnia and Herzegovina, सर्ब्स, सर्बिया में भी काफ़ी वायलेंट हुआ था, राइट, ठीक है ना, सर्ब्स। उसके बाद तुम्हारा दिस इज़ व्हाट, मैसेडोनिया, राइट, ठीक है ना। सो दीज आर व्हाट योर कंट्रीज। नाम याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, राइट, ठीक है ना। एक मॉन्टेग्रो भी होगा, मॉन्टेग्रो, यस यस, दैट लेटर वन बना था, ठीक है। सो ये ध्यान में रखो कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया व्हाट इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। तो एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न, दैट्स एनफ, ओके। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस, दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, बताओ। Social differences create possibilities of deep social divisions, right? Overlapping or cross-cutting. What is the answer? What will be the answer? Which social differences create possibilities of deep social division and tensions, right? Overlapping, right? And social differences do not usually lead to conflicts. What is that? अभी किया ना, क्रॉस कटिंग, राइट, ठीक है ना, यस। सो दैट इज व्हाट, ओवरलैपिंग एंड व्हाट, क्रॉस कटिंग, राइट, ठीक है। And this is what, cross. Now, next question. In dealing with social division, which one of the following statement is not correct about democracy? Due to political competition in a democracy, social division get reflected in a politics. In a democracy, it is possible for communities to voice their grievances in a peaceful manner. Democracy is the best way to accommodate social diversity. Democracy always leads to disintegration of society on the basis of social divisions. It's a very simple question, right? तो नहीं भी पढ़े होगे तो कर दोगे, right? ठीक है। What will be the answer? Ishanvi saying D, Sorry saying D. Good, ठीक है ना। So answer will be what, D. Harshit, Utkarsh, Tanay, they are saying what, D. Yes, Pathi is also saying D. Sorry, D. Bhumi is saying D. Daksh, D, right? Yes, so D is the answer, right? Simple question. Next, consider the following 3 statements. Social division takes place when social differences overlap. It is possible that a person can have multiple identities.
And the social division exists in only big countries like India. Which of the following statement is are correct? A, B, C, A and B, B and C, only C. What's your answer? Harshit is saying B, Saud is saying B, Pakhi is saying B, right? Daksh B, Ishanvi B, Utkarsh B, right? Yes, the answer will be what B. Social division takes place when social. Yes, Tana, got it very much correct. Thanks for the response. So social division takes place when social differences what overlap, right? That's correct, right? uh, it is possible that a person can have multiple identities. Yes, rich and poor, religion based, race based, caste based, on the basis of language also, right? So you can have multiple identities. Social division exists in only big countries like India. No, it's not like that. श्रीलंका में भी social divisions थे. तुम आयरलैंड में देख लो, राइट? नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब दैट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, राइट? बेल्जियम में देखो, वहाँ पे भी था. सो दोज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, बट सोशल डिवीजन इज देयर ऑल्सो. एंड ऑफ कोर्स इंडिया में तो है ही है, राइट? सो द थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सी अगर गलत हो गया तो वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे. सो आंसर विल बिकम व्हाट योर बी. ये जो यहीं से ये क्वेश्चन जो बनाया गया है वो फर्स्ट लाइन से ही बनाया गया है, ठीक है ना? नेक्स्ट. Arrange the following statements in a logical sequence and select the right answer by using the code given below, right? So these are the, इसको arrange करना है. But all political expressions of social division need not be always dangerous. Social division of one kind or the other exist in most countries. Parties try to win political support by appealing to social divisions. Some social differences may result in social divisions. Try करो. Harshit is saying A. Okay. ठीक है. Alice is saying B. BBAC. देखो, देखते हैं. Ishanvi is saying A, right? So some of you are saying A, some of you are saying B, right? ठीक है ना? So let's see. Uh, Paki is saying A. So now 75% of people are saying A, right? Out of 4, 3 are saying A. So देखो, some social differences may result in what? Social division, right? ठीक है ना? Okay. Like that, overlapping social differences, what? They were leading to what? Social division, right? Okay. So that is what the D will come. After that, you see B. Social division of one kind or other exists in most countries, right? ठीक है. So D or B. इसमें तो almost you all are agreeing, right? Now the problem with C and A, right? So basically, what if you see C A, but all political expressions of social division need not be always dangerous, and the C part is what? Parties try to win political support by appealing to social divisions. So C will come first, right? Parties, they try to win political support by appealing towards social divisions, but all political expression of social division need not always be dangerous, right? ठीक है. So answer will be DBCA. ध्यान में रखिएगा. जरूरी नहीं है, ये एक चीज ध्यान में रखो, दिस इज ऑल्सो that whether it is good or bad. So in your textbook it is clearly mentioned that it's not wrong to demand for the support by appealing to social divisions. It's not wrong, right? In a democracy it happens, and it should happen, right? It should not happen beyond a certain point, right, which may lead to the disintegration of the country, right? That's another matter, right? But it's not bad. Okay. So इसलिए वो बोल रहा है कि parties try to win political support, but the next point, but all political expressions of social division need not be always dangerous. Some are what? Sometimes beneficial also, right? Those who voice for the downtrodden people in the society, right? So that voice, you can say, they are demanding the support of those people, right? But that is ultimately benefiting those people, right? Okay. और उनके अंदर जो एक एंगर है उसको एक जरिया मिल रहा है, राइट, वेंट आउट करने का. सो दैट इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी, राइट? अदरवाइज तो in the long run democracy will have problem, right? Okay. So that is what the question number 7. Question number 8. Among the following, which country suffered disintegration due to political fights on the basis of religious and ethnic identities? Belgium, India, Yugoslavia, and it's a very simple. Ishanvi is saying C, Harshit C, right? Okay, Alice is saying C. Very good. Gaurav, Utkarsh is C, right? So answer is what? C. Okay. Yes, Tana is saying C.
तो अखिलेश सिंह सी, ओके, सो आंसर विल बी ऑट सी। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, राइट। सिविल राइट मूवमेंट्स इन यूएसए लेड बाय अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एफ डी रूजवेल्ट, राइट। ईशानवी सिंह थ्री, राइट, ओके। एलिस सिंह थ्री, ओके। Achilles saying 3, right? Utkarsh C. Good. So the answer is what? Martin Luther King Jr., right? बाकी भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज वॉशिंगटन, यू नो दैट ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। और जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो वॉर लड़ा गया था, राइट, ठीक है ना, तो उनको भी जॉर्ज वॉशिंगटन ने ही लीड किया था, राइट। सो आई हैव टेकन एग्जाम्पल्स, अदर ऑप्शंस, राइट, ओके, फॉर अ रीज़न। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए तुम्हें, राइट। सो अब्राहम लिंकन, वाई ही इज़ वेरी फेमस, इज़ वेरी फेमस। अमेरिकन सिविल वॉर, राइट। तो अमेरिकन सिविल वॉर जब हुआ था, राइट, ओके, सो एट द टाइम ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, ठीक है ना। And Franklin F D Roosevelt, right? So F D Roosevelt, basically what, he was the president of United States during Second World War, right? So he was the POTUS. POTUS is basically what? Maybe you have heard about these words, POTUS, right? So POTUS is nothing but president of the United States, right? Okay, like you will see FLOTUS, right? That is what, first lady of the United States, right? So that is what POTUS. So he was the POTUS at the time of World War II. So this is what your first lady, okay, and this is what president of the United States, right? And FD Roosevelt is the longest serving president, remember, in the US. Generally US में क्या होता है, प्रेसिडेंट 2 टर्म्स के लिए होते हैं, राइट, ठीक है ना। तो ऐसे ये पहले मेंशन नहीं था जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आया, राइट, ठीक है ना, 1787 में, राइट। जब तो 1787 में जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उस टाइम में ये कहीं मेंशन नहीं था कि प्रेसिडेंट को 2 बार ही, मतलब कोई भी 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। इट वॉज अ नॉर्म एक्चुअली दैट वॉज सेटअप बाई वॉट, जॉर्ज वॉशिंगटन, राइट। सो सी द विजन ऑफ द देयर फाउंडिंग फादर्स, राइट, ठीक है ना। कौन पावर देना चाहता है अपने हाथ से, बट एक्चुअली वॉट ही स्टेप डाउन आफ्टर हिज सेकेंड टर्म, और वो एक नॉर्म बन गया था, राइट। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, आई थिंक ही वॉज प्रेसिडेंट फॉर मोर देन 10 years, आई थिंक, राइट। सो ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन अमेंडमेंट्स हुए, एंड नाउ यूएस में इट इज़ द पार्ट ऑफ इट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, दैट नोबडी कैन सर्व एज अ प्रेसिडेंट फॉर मोर देन 2 terms, राइट, ठीक है। So that is what, these are the 4 names related to United States history, and you should know, right? Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is true? Let's see who answers. Black Power movement was an anti-racist movement in USA. It was a peaceful, non-violent movement led by Afro-Americans. Both 1 and 2, none of the above. Ishanvi is saying 3. Alice is saying 3. Sorry is saying 3. सब 3 ही बोलोगे? सॉरी सेइंग, ओके, सॉरी, थैंक यू। सॉरी सेइंग 1। बच्चा इसमें फंसना नहीं है, आंसर चेंज करना चाहोगे? इट वॉज अ पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट, वॉज इट? वॉज इट? अखिलेश सेइंग 1, सॉरी सेइंग 1, राइट, ठीक है ना। It was not peaceful, it was non-violent. I mean, it was a violent movement, sorry, it was not non-violent, right? So Black Power movement was a violent movement, right, ठीक है ना। Okay, तो ये ध्यान में रखिएगा, अभी तो बताया, right? So if you see where it is, right, this was what, see what is written, even violence. So it was a violent movement. Yes, civil rights movement, which was led by basically what, Martin Luther King Jr. It was a basically what, non-violent movement. But the Black Power movement was violent movement. You remember that, right? Okay. The origin भी यहीं से हुआ था, because of the difference of opinion, in between Malcolm X and Martin Luther King Jr. Right? मतलब Malcolm X चाहते थे कि हम लोग movement को ऐसे lead नहीं करें, because it will not be beneficial for blacks, right? Anyway, so answer will be
1, ध्यान में रखिएगा, इट विल नॉट बी सी, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आराम से सोच के बताइएगा। दैट इज नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इन नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट्स आर इन मेजोरिटी, बोथ 1 and 2, none of the above। शानवी सिंह 2, एक्सेलेंट बच्चा, वेरी गुड। देखते हैं और बाकी लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हो। एटलीस्ट रिस्पॉन्डेड, सी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सॉरी 2, अरिजीत इज सिंह 2, अर्जित, सॉरी नॉट अरिजीत, अर्जित। So, which of the among the following statement is true? Northern Ireland is a part of Great Britain. Akhil is saying too. No, 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 it's not. It's part of United Kingdom. It's part of United Kingdom. यूके का पार्ट है, राइट, ठीक है ना। यूके में आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है और आपका ग्रेट ब्रिटेन है, राइट। और इस ग्रेट ब्रिटेन में फिर इंग्लैंड है, फिर स्कॉटलैंड है और फिर क्या है आपका वेल्स, राइट, ठीक है ना। सो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो आंसर दिस इज व्हाट, इफ यू सी in northern ireland, yes, protestants are in majority, right, ठीक है ना। in ireland basically what, catholics are in majority, that was because of that certain kind, I mean such kind of conflict there was, I mean the conflict was going on, right, ठीक है ना। so the answer is basically what, ध्यान में रखिएगा, both are given, so it can come as a question। you remember that protestants they were in majority in what, your northern ireland, और protestants आपकी यूके में भी मेजोरिटी में, बट कैथोलिक्स जो नॉर्दर्न आयरलैंड में माइनॉरिटी में है, दे आर इन मेजोरिटी इन व्हाट, आयरलैंड, राइट, ओके। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, आंसर विल बी व्हाट 2, ठीक है ना। चलिए गुड, मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली, ओके। नाउ आर यू सेइंग समथिंग, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, राइट, ठीक है ना। so this is what you can say, social division on the basis of gender we will see, social division on the basis of religion we will see, and social division on the basis of caste we will see। I don't think anything is there to explain to all of you, right, okay, you all know, right, but मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बताऊंगा ये कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते, राइट, ठीक है ना। सो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, नथिंग इज देयर। सो पहले जेंडर के बेस पे देखते हैं। डू यू सो दिस व्हाट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, राइट, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ सपोज, राइट, ठीक है ना, घर में अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि खाना बनाने का किसका मतलब, कौन खाना बनाता है, राइट, ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ यू और प्रोबेबली ऑल ऑफ यू विल आंसर व्हाट, मम्मा खाना बनाती है, ठीक है ना। सो इंडिया में अगर तुम देखो, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इंडिया और जो ईस्ट है, मतलब एशियन कंट्रीज है, वहीं पे ये डिस्क्रिमिनेशन है। दिस डिस्क्रिमिनेशन इज, यू नो, इट्स देयर इन वेस्ट ऑल्सो, राइट, ठीक है ना। So in this regard, waste is waste. I mean WST and WAST, right? Okay. So this is what I will give you one example. So this is what, sexual division of labor. There is a word, sexual division of labor, right? So there are certain works which are associated with certain sex. जैसे खाना बनाना, female, right? कपड़ा धोना, female, right? घर का बच्चे पालना, ये सब मतलब all these things are what? So that is what, हाउ मेनी ऑफ यू टाइम यू हैव सीन कि कोई एक आध दिन के लिए नहीं, ऐसे नहीं कि संडे को पापा घुस गए और खाना बना रहे, राइट, ठीक है ना। तो नहीं, मेरे पापा भी खाना बनाते हैं, ठीक है, रेगुलरली नहीं बना रहे हैं, राइट। सो रेगुलरली व्हाट, योर मदर इज मेकिंग फूड, राइट। सो दैट इज व्हाट द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, एंड द वर्स्ट पार्ट इज व्हाट, सी इज नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट, राइट, ओके। सो यू विल से नाउ कि हाउ कैन यू से सर लाइक दैट, राइट, अपनी फैमिली के लिए भी काम कर रहे हैं और उसके लिए भी उनको पे करें, राइट। सो that's a fair point, but the point is what you see कि आपकी जो आधी आबादी है वो काम तो कर रही है, but they are not getting paid for that, and if they are not getting paid for that, that is creating some other problems। I will give you one example, right? जैसे generally females, I mean they don't have what, more financial independence, because they are not getting paid, because they are not involved in work, you know, they are not the part of you know, workforce, right? Female labor force participation is very low in India, right, ठीक है ना।
So it's very low in India. That means what? That means they are not financially independent. If they are not financially independent, and if something bad is happening with them, right, what they will do? Do you think that they will raise their voice against the people who are doing bad to them? They will not, because they know that they can't survive outside, right? So what happens? Basically, what, after a certain point of time they start, taking it as their fate. मतलब उनको लगता है कि अच्छा ये तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, राइट, ठीक है ना, सो लेट्स फेस इट, ओके, और जो भी होता है उसको वो सह लेते, लाइक दैट, ऑल दिस थिंग्स, राइट, बट द डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, राइट. So that is what gender and politics, you can say, and the politics associated with that, right? Many political parties said that we will give what, reservation to women in what, parliament, right? Okay. But reservation to women in parliament is there. Is it there in Lok Sabha, or is it in state legislative assembly? Is it there? Yes, no. Yes, Alish, excellent. It's not there, right? But there is a demand. There is a demand, that we should give. And yes, you should give, because you see, approximately 40%, 48% of Indian population, right? They belong to what, this gender, right? Female. And their participation, how many, I mean, how much participation is there in Lok Sabha? If you see in 2019 Lok Sabha, how many female, I mean, how many, male or female is there, right? In out of 543, there are 78 women out of 543. How much percentage approximately, अगर तुम देखो तो कितना परसेंट हुआ? 15%, 15%, 14% के आसपास हुआ, राइट, ठीक है ना? सो 14%, यू सी, population 48%, आपका presentation 14%, right? So that means what will happen if certain law which is beneficial for women, right, they will not get their, what, preference in Lok Sabha. अगर women ही होगी, अगर एक अच्छे खासे majority में, more than 33%, then they will raise their concern, right? The concern of their section, right? Women's, right, in this country. So that means what? That's why many people, many political parties, they say, right, कि we will give, but एक बार power मिलने के बाद they probably they forget, right? Okay, and for some genuine reason why they forget, probably you also understand, right? Okay. So anyway, so this is what gender and politics, इसमें कुछ कुछ क्या क्या important है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस कंप्लीट लेक्चर इज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स. सिंपल, इनके बारे में सुना है तुम लोगों ने? डू यू नो अबाउट दिस लेडी? एनीवन? पेप्सिको की चेयरमैन थी इंदिरा नूई, राइट? शी इज़ एन इंडियन, राइट? शी इज़ नॉट, आई मीन, करंट चेयरमैन नहीं है, बट शी वॉज चेयरमैन ऑफ पेप्सिको, राइट? और उनकी मदर का स्टेटमेंट क्या था? Her mother telling her, "Let me explain something to you. You might be president of PepsiCo. You might be on the board of directors. But when you enter this house, you are the wife. You are the daughter. You are the daughter-in-law. You are the mother. You are all of that. Nobody else can take that place. So leave that demand crown in the garage and don't bring it up to the house." I have never seen that crown, right? So that means what she was saying कि जब मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो पीपल एक्सपेक्ट, माई हस्बैंड एक्सपेक्ट, राइट, माई फैमिली एक्सपेक्ट कि मैं उनको चाय बना के दूँ, राइट, दो आई एम वर्किंग. सो दैट मीन्स व्हाट शी इज सेइंग कि it's not that easy for a woman to work also, right? Because it becomes very difficult when you have a child. It will become more difficult for you, right? Okay, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, राइट? ओके, सो दिस इज़ वॉट द कंडीशन. मतलब ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि ऐसा इंप्रेशन बना के मत जाओ कि जो फीमेल की जो कंडीशन है वो ख़राब केवल मिडिल क्लास फैमिली में और लोअर क्लास फैमिली में, राइट? और द डिस्क्रिमिनेशन इज इन मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली, राइट? द डिस्क्रिमिनेशन इज द अपर क्लास फैमिली ऑल्सो, राइट, इन अ सर्टन वे, सर्टन अदर वे, राइट? बट डिस्क्रिमिनेशन इज देयर. ओके, so there is a movement also, feminist movement, right? And that is what these line I have taken from NCRT. So most radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well, right? So these movements are called what? Feminist movement. And ऐसा नहीं है कि इसमें केवल women ही involved हैं, some sensible men are also involved, right? Okay, though there are certain ऐसे जैसे देखोगे कि इसका काफ़ी जगह क्रिटिसिज्म भी होता है, आप लोग देखोगे, क्योंकि कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते, राइट? ओके, सम पीपल टेक बेनिफिट्स ऑफ सच मूवमेंट्स, राइट?
But just because some of the people are taking benefits, you cannot ignore the complete movement, and you cannot ignore from this particular fact that there is discrimination in our society that exists. That's a reality, right? And we have to accept that. Until unless we will not accept, we will not be able to what? Cater those inequalities or discrimination, right? Okay. So that is what feminist movement. अब देखो कुछ यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है यूपी में स्टेज वन में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि यूपी में बेसिकली क्या है, मेल टू फीमेल रेशियो क्या है, ठीक, 6 रेशियो पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट, ठीक है ना। 2011 सेंसस, 2021 का सेंसस अभी हुआ नहीं है तो उस पर क्वेश्चन आएगा नहीं। उससे पहले ही अगर होना भी शुरू होगा तो उससे पहले ही तुम्हारा स्टेज वन हो जाएगा फॉर श्योर। स्टेज टू के लिए ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है कि यूपी में कितना है, नेशनल लेवल पे देख लो। तो मैंने वो दोनों डाटा दे दिया है, राइट, ठीक है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर तुम देखोगे इस सेक्शन में, एक तो क्या है, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मीन्स व्हाट, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, राइट। सो मोस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटीज आर व्हाट, पैट्रियार्की इन नेचर, राइट, दैट यू कैन सी, ठीक है। वैसे अगर तुम देखोगे ऐसा नहीं है कि ऑल द सोसाइटीज इन इंडिया आर व्हाट, पैट्रियार्की इन नेचर, राइट, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। some of the societies in northeast you will find, right, mostly tribal societies, right, they are basically what the female counterpart, they play a very important role, right, ठीक है ना। तो बट जिस एरिया में हम लोग हैं, यूपी बिहार, दिस सेक्शन, दे आर बेसिकली व्हाट द सोसाइटी इज व्हाट, मैट्रियार्क, आई मीन पैट्रियार्कल नेचर, राइट, ओके। नाउ ये सब जो है, ये दिस इज व्हाट, जो डाटा मैंने दिया वो याद रखना, ठीक है। एक है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, राइट, but that is again not followed, right, for obvious reasons. You know that even कंपनी जो है उनकी हायरिंग पॉलिसी में भी अगर तुम देखोगे तो देर इज सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट। उनको ऐसा लगता है, यू नो, दैट कि वुमेन है, देर इज अ पॉसिबिलिटी शी विल बिकम प्रेग्नेंट, एंड इफ शी विल बिकम प्रेग्नेंट, राइट, शी विल डिमांड फॉर द लीव, राइट, and you know, as a company we will have to pay for that also, right, okay. So they will what, they will you know, uh, move their policy of recruitment, right, or they will prefer men more, right, then but it's, अब इनमें जो वुमेन है उनकी गलती थोड़ी ना है, राइट। यू जस्ट इमेजिन दैट ऑल द वुमेन इन दिस कंट्री दे स्टैंड एंड दे से कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू बी मदर, राइट, आफ्टर दिस, व्हाट विल हैपन, राइट, व्हाट विल हैपन as a society, we, you know, we will be able to survive? No, we will not be able to survive, right? So that means what, children, they are also important, right? Like you, I mean, you are children, right? You all are 14 15 years old, right? You are the future of this country, right? Okay. So that means what, कि बच्चे भी होने चाहिए। अब नेचर ने वो जो राइट दिया वो माँ को दिया, राइट, ठीक है ना। तो इसमें उनकी गलती थोड़ी ना है कि वो माँ बन रही हैं और उसकी वजह से आप हायरिंग पॉलिसी कुछ इस तरह से कर दो कि उनसे आप डिस्क्रिमिनेट करो, राइट, ठीक है ना। So that is what, because of that this act came, but anyway this act is not followed in the letter of and spirit, you can say, right, okay. So this is what, एक act याद रखिएगा और year याद रखिए, right, okay. That is what, equal remuneration act. And then some of the data, this is for stage वन। stage टू के लिए इसको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। stage टू में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, यूपी बेस्ड, राइट। तो क्या क्या, अब सारा नहीं रटना है, ठीक है। इसमें क्या क्या रटना है, सेक्स रेशियो, राइट। सो 2011 में सेक्स रेशियो इज़ व्हाट, 912, एंड 2001 का डाटा मत याद करो। चाइल्ड सेक्स रेशियो, दैट इज व्हाट, 902। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो? सो चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या है बेसिकली व्हाट, उसमें जो हम लोग, एनीबडी नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड, आई मीन व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड सेक्स रेशियो? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस, राइट। व्हाट्स द डिफरेंस, एनीबडी नोज? चाइल्ड सेक्स रेशियो में बेसिकली क्या है, यू हैव टू टेक, मतलब जो एज, दैट इज व्हाट, 0 to 6 ईयर। सो 0 to 6 ईयर के बीच में ही जो रेशियो है, दैट इज व्हाट, 902। नाउ एनीबडी कैन से व्हाई द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज लेस इन इंडिया देन सेक्स रेशियो? कैन यू थिंक व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? आज से 2 या 3 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था, राइट। इकोनॉमिक सर्वे में इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वर्ड यूज़ किया, सन मेटा प्रेफरेंस। सन मेटा प्रेफरेंस, राइट। सन मेटा प्रेफरेंस मीन्स व्हाट, पीपल आर प्रेफरिंग सन because they don't want 3 4 kids, right, they want only 2 or 1 kid, so they are preferring son. Even you see what happened in China, one child policy in 1979 80, right.
1979-80 one child policy came in China. What is happening? Now they removed that policy, right? Because of that, what is happening that वहाँ पे अब एक ही बच्चा है तो पेरेंट्स ने मेल प्रेफर किया, मेल चाइल्ड प्रेफर किया, राइट, ठीक है ना? ओके। और उसकी वजह से वहाँ पे सेक्स रेशियो इतना ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो गया है कि वहाँ के लड़कों को अब लड़कियाँ ही नहीं मिल रही हैं शादी करने के लिए, ठीक है ना? दैट मीन्स द सेम हैपेंड विद हरियाणा। हरियाणा में अगर तुम देखोगे, राइट, ठीक है ना? सो बेसिकली व्हाट, हरियाणा में सेक्स रेशियो वाज, आई मीन नाउ इट इज़ इम्प्रूविंग, बट एक टाइम था सेक्स रेशियो वाज वेरी बैड, राइट? नाउ इट इज़ स्टिल बैड, राइट, बट इट इज़ इम्प्रूविंग, राइट? तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे शादी के लिए उनको लड़कियाँ नहीं मिलती थी। सो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोलेरो मैरिज, राइट? सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डेरोगेटरी यू कैन से, बोलेरो मैरिज, राइट? बोलेरो मैरिज। तुम बोलोगे सर बोलेरो मैरिज क्या है बेसिकली? तो बोलेरो मैरिज में क्या होता था, हरियाणा से वो लोग आते थे शाम में, राइट, बोलेरो गाड़ी से जनरली, राइट? और बुंदेलखंड जो रीजन है यूपी का, बुंदेलखंड, जिसमें उड़ई भी आता है, ठीक है ना? सो दैट रीजन इज़ नॉट दैट प्रॉस्परस। उड़ई सिटी प्रॉस्परस है, मैं गया हूँ, ठीक है ना, मतलब रिलेटिवली, बट उसके आसपास के जो रीजन्स है, राइट, दे आर नॉट दैट प्रॉस्परस, राइट? पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, राइट? तो पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ से लोग आते थे यहाँ पे और शाम में चले, रात तक पहुँचे, रात में शादी हुई, राइट, ठीक है ना? और सुबह फिर, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ, एंड दीज पीपल वेर पेइंग एक्चुअली फॉर द ब्राइड, राइट? दे वर पेइंग, दोज पीपल दे वर कमिंग फ्रॉम हरियाणा, राइट? और जो लड़की वहाँ जाती थी घर में, उसका क्या काम होता था? टू मेक फूड, राइट, एंड टू इवन sexually satisfied everyone in the family. Do you, I mean, can you believe this? This was the practice there, right? Everyone from top to bottom, because वहाँ पे, so you see, if there is a you know, if sex ratio is not good, how it can impact society, right? अगर तुम देखोगे इंडिया का, सो इट इज़ वॉट 940 आउट ऑफ 1000, राइट, ठीक है ना? सो दैट इज वॉट सेक्स रेशियो। इट, आई मीन, एंड मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, देयर यू विल फाइंड दैट सेक्स रेशियो इज वॉट क्वाइट गुड, राइट? देयर इवन नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर पर 1000 मेल, राइट? वी विल सी दोज डाटा ऑल्सो। तो ये दोनों ध्यान में रखो, चाइल्ड सेक्स रेशियो ध्यान में रखो, राइट, ठीक है ना? नेक्स्ट, ये डाटा मैंने, इंडिया में क्या है, दिस इज़ व्हाट 940। तो ये स्टेज 2 के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेज 2 के लिए, वैसे स्टेज 2 में डाटा बेस्ड मैंने क्वेश्चंस बहुत कम देखे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर हैं, राइट, ठीक है ना? सो दैट इज़ व्हाट, जस्ट रिमेंबर, इट इज़ व्हाट 940, राइट? दिस इज़ व्हाट इंडिया सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो मीन्स व्हाट 0 to 6 years, ओके? एंड नाउ दिस इज़ व्हाट, दीज आर द कंट्रीज वेयर, जहाँ पे अगर तुम रेड देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेल हैं, दे आर व्हाट मोर देन फीमेल, राइट? मेल आर मोर देन फीमेल। एंड जो भी ब्लू हैं तुम्हारे, दे आर व्हाट, ब्लू जो हैं, दे आर व्हाट, फीमेल इज व्हाट ग्रेटर देन मेल, राइट? So that means per 1000 male here, the number of female will be what, more than 1000, right? But in India, China, Pakistan, you see, right? In these regions, you will find that the male is what, they are more than what, female, right? Okay. China, because of China condition is very bad, right? There I think it's 927, right? Because it was too much in news, so I remember 927, right? Because of one child policy, right? So if somebody supports one child policy in this country, right, we can learn a lot from what, China. Fine. This is what next, green reasons. ग्रीन रीजन, यस यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ग्रीन रीजन में ऑलमोस्ट बैलेंस, राइट? मतलब कुछ 1000 में 998 हो गया या फिर 1002 हो गया। सो इट इज़ वॉट काइंड ऑफ बैलेंस्ड बच्चा, ठीक है ना ईशानवी, राइट? गुड क्वेश्चन, राइट, ठीक है। एंड रेड, ओके, एंड ब्लू, राइट? सो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज यू विल फाइंड दैट दे आर इन वॉट, ब्लू, राइट? चल, नाउ वुमेन इन लोकसभा, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन, how many member of parliaments are there from UP? How many member of parliaments? यूपी में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं? एनीवन? ऑप्शन दूं? चलो ऑप्शन दे देता हूँ। लेट मी गिव यू द ऑप्शंस, राइट? फर्स्ट 80, सेकंड 75, थर्ड 70 एंड फोर्थ none of the above, right? Utkarsh is saying 75, okay, member of parliament. Ajit is saying B,
बी, बी, तुम लोग पढ़ लो भाई। ए, समृद्धि सिंह ए, हर्षित ए, राइट। चलो, थोड़ा सा पास आए हो, राइट। एटलीस्ट 75 तो मत बोलो, 75 इसलिए बोल रहे हो क्योंकि 75 टोटल कितने थे यहाँ सिटीज, राइट। 75 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, राइट, इन यूपी। 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भाई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? 80 भी नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या? लोकसभा में 80 हैं और राज्यसभा में कितने हैं? 31 है, तो टोटल 111। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, राइट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या? पार्लियामेंट जब हमने पढ़ा था तो देखा था उसमें राज्यसभा भी आता है, लोकसभा भी आता है, राइट। प्रेसिडेंट दे आर, आई मीन ही इज आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट। सो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? यस 80, आई अग्री। राज्यसभा में कितने? 31। तो टोटल कितने हो गए? 111। याद रखिएगा, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम यूपी आ जाए, आंसर विल बी 111। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोक, आई मीन, or members in Lok Sabha, then it will be 80, and members in Rajya Sabha, then it will be what? 31, right? So this is what the UP's representation. ये क्वेश्चन कई बार आया है, राइट, आपके स्टेज 1 में ये वाला क्वेश्चन। मे बी नेक्स्ट टाइम दे विल आस्क फ्रॉम राज्यसभा, और मे बी दे विल टेक द क्वेश्चन एंड दे विल आस्क जस्ट सिंपली फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। हाउ मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? 111, राइट, ध्यान रखिएगा। Now, if you see women in Lok Sabha 2019, and this was so much in news, right? So remember it, 2019 में maximum number of women in Lok Sabha. So since independence, I mean, this Lok Sabha, 17th Lok Sabha has maximum representation of what? Women, right? So it is what? 78. Okay. So, and women in Rajya Sabha अगर तुम देखोगे, so this is what आज की डेट में, as of now, I mean today 17th of September, right, it is what? 26. Okay, so 26 राज्यसभा में है अभी वुमेन मेंबर, एंड 78 आपके लोकसभा में, सो दैट इज नॉट मोर देन 100. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, 17th लोकसभा के बाद पहली बार ऐसा हुआ सिंस इंडिपेंडेंस कि हमारे पास मोर देन 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मोर देन 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन व्हाट? इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। वुमेन पार्लियामेंट आई एम टॉकिंग, राइट। तो ये स्टैट्स हैं, थोड़े बहुत ध्यान में रखो। ये नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नंबर चेंज होते रहते हैं, तो इस पर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे वो लोग, राइट, ठीक है ना। पता चला क्वेश्चन बनाया और बीच में कोई राज्यसभा मेंबर, यू नो, मतलब कि उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई या फिर उनको सब्सटीट्यूट कर दिया गया किसी और से, राइट, लाइक दैट, सो दे विल नॉट मेक अ क्वेश्चन। बट इतना याद रखो कि हाँ, पार्लियामेंट में अभी 78 है वुमेन, राइट। पार्लियामेंट नहीं, वुमेन इन वॉट? लोकसभा, राइट, एंड 26 in what? राज्यसभा. 2019 17th लोकसभा has what? Maximum women representation. ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, what about other countries, right? So they have what? More represented. What about Pakistan, right? If I ask, maybe you will say that in Pakistan women representation is less. No, it's not. Women representation in parliament is more in Pakistan than India, right? Okay, so that is what you can see here. Pakistan here, it is what? India here, right? Okay. So our neighbor is performing well on this particular aspect, at least I can say. Nepal में even it's more than Pakistan, right? Like that. So again, not that important, just for the difference मैंने दिया है यहाँ पे, right? ओके, एक चीज़ मैं बताऊँगा, ये एनसीईआरटी का जो डाटा है, देखो अरब स्टेट्स अब ज़्यादा है एक्चुअली। दिस इज़ व्हाट, ये जो ओल्ड एनसीईआरटी के ही पड़े हुए हैं पीडीएफ्स नेट पे, राइट, तो मैंने वहीं से लिया है। एक्चुअली न्यू एनसीईआरटी में देखोगे तो दिस इज़ व्हाट 11.8%, एंड देयर यू विल फाइंड इट इज़ अरब स्टेट्स आर नाउ इम्प्रूविंग, दे आर बिफोर पैसिफिक्स, राइट। ओके, तो अरब स्टेट्स यहाँ पे है, पैसिफिक उसके बाद में। इनफैक्ट यू विल फाइंड सम चेंजेस हियर ऑल्सो, American countries they are also improving, right? Okay, some changes you will find. I think in Nordic countries the percent is same in the new NCERT, so just check it. Okay, fine. Check new NCERT, right? This diagram is there in NCERT, so diagram एक बार देख लेना. They can ask a question from this particular diagram, right? Okay, चलिए. Now religion, communalism and politics, right? देखो गांधी जी क्या कहते थे? तो गांधी जी जो कहते थे कि used to say that religion can never be separated from politics, right? Okay. And he believed that politics must be guided by ethics drawn from the religion, right? Okay. तो अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट करना चाहते थे, नो, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट, राइट। ओके, नेक्स्ट, कम्युनलिज्म वर्ड की अगर तुम बात करो
अभी तो खूब ही न्यूज़ में पोस्ट 2014 इट इज़ सो मच इन न्यूज़ कम्युनलिज्म राइट ओके दो कम्युनलिज्म वाज देयर बिफोर 2014 also right okay but nowadays it is so much in news communalism. So what is communalism? That word, let's understand that word, is a term used to, and this word has a broader meaning, but this particular definition is you know as per साउथ एशिया राइट ठीक है ना तो साउथ एशिया में ये डेफिनेशन विच इज़ वॉट मोर प्रिवलेंट राइट एंड वी आर इन साउथ एशिया राइट ठीक है सो फॉर अस ऑल्सो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन विल वर्क सो कम्युनलिज्म इज अ टर्म यूज टू डिनोट अटेम्प्ट्स टू कंस्ट्रक्ट religious or ethnic identity, incite strife between people identified as different communities, and to stimulate communal violence between those groups, right? And such type of politics is known as what? Communal politics, right? Okay. And in India, as per my मतलब मुझे लगता है एवरी पार्टी डज दैट राइट कुछ लोग ओवर्टली करते हैं और कुछ लोग ओपनली करते हैं राइट ठीक है ना कोवर्टली करते हैं और ओवर्टली करते हैं राइट overtly means what openly right and kuch covertly karte hain but all are somewhere to some extent they are involved in what communal politics right okay chaliye next is what secular state अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके सेकुलर स्टेट पे इंडिया इज अ व्हाट सेकुलर स्टेट राइट इवन द सेकुलर वर्ड वाज एडेड थ्रू व्हाट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 राइट क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देख लेते हैं एक बार देखो वैसे ध्यान में रखना कि इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म इज व्हाट डिफरेंट ठीक है ना इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म इज डिफरेंट वेस्टर्न सेकुलरिज्म में व्हाट रिलीजन और स्टेट को रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है राइट ठीक है ना सो स्टेट एंड रिलीजन राइट इज सेपरेटेड it is what separated so that is what western secularism right and state do not interfere in the matter of what religion right ठीक है ना what is Indian secularism इंडिया में ऐसा नहीं है स्टेट एंड रिलीजन दे आर नॉट सेपरेटेड आई विल गिव यू एग्जांपल्स आल्सो सो इंडियन सेकुलरिज्म इज व्हाट डिफरेंट हियर स्टेट is neutral it's not separated state is what neutral so state is what neutral towards religion not separated जैसे कुछ लॉज अगर तुम देखोगे जैसे जो पर्सनल लॉज हैं मैरिज के अकॉर्डिंग लॉज जो हैं ठीक है ना और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो लॉज हैं राइट दोज लॉज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिलीजन and that law basically that is made by what state so that means what state is it's not completely away from the what religion in India that is what Indian secularism jabki western secularism is what state and religion they are what completely separated state ko religion se koi matlab nahi hai right so India is a secular state there is no doubt about that though secular word was not there in Indian constitution to is pe ek question ban sakta hai secular word was added later on Dr. B.R. Ambedkar was not willing to add this particular word in Indian Constitution, right? ठीक है ना ऐसा नहीं था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको आइडिया नहीं था सेकुलर वर्ड का राइट सेकुलरिज्म हो गया फेडरलिज्म हो गया राइट दीज वर्ड्स आर नॉट देयर इन दीज फेडरलिज्म तो आज की डेट में भी नहीं है सेकुलरिज्म इज देयर राइट इट्स देयर इन प्रीएम्बल राइट ओके सो एक ये ध्यान में रखिए वो वर्ड कब ऐड हुआ था और दूसरा ये ध्यान में रखिए कि Article 15 that we have already done that right the constitution prohibits discrimination on the ground of what religion चार और थे कोई बताएगा anyone you cannot discriminate among people on the basis of there are five terms were there right एक तो religion था yes creed नहीं sex yes CRRSP बताया था ना C caste religion race right yes place of birth caste religion race sex and place of birth right so one is there what religion right okay yes Ishanvi very much correct बच्चा right excellent caste sex and place of birth याद रखिएगा इस पे क्वेश्चन बन सकता है right ठीक है At the same time, the constitution allows the state to intervene. मतलब इंडिया में देखो क्या है in the matters of religion in order to ensure
equality with religious communities. For example, it bans what? Untouchability, right? Article 17, we have already done that. Caste and politics. Okay, कास्ट के बारे में आइडिया है? कास्ट जो सिस्टम है बेसिकली व्हाट, राइट, अगर तुम अर्ली वैदिक पीरियड में जाओगे, सो दैट कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन नॉट, इट वाज बेस्ड ऑन वर्क, ठीक है ना, बर्थ पे बेस्ड नहीं था. मतलब सपोज इफ आई एम अ टीचर, राइट, बाय प्रोफेशन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट माय सन विल बी अ टीचर, राइट. ओके, if I am a warrior, my son will be a warrior, right? If I am a merchant, my son will be a merchant, right? So if I am teaching and my suppose my son, right, he is going to fight for the country, right? In that case, my son will become what? Kshatriya, and I will become Brahmin, right? So that caste was what in early Vedic period, right? It was based on what? The work you do. But later on what happened, that ये एक तरह से क्या हो गया, बाई बर्थ कास्ट का डिवीजन हो गया. मतलब अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, राइट, ठीक है ना. क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा. सो दैट इज व्हाट देयर आर 4 कास्ट. इसको वर्णा सिस्टम बोलते हैं, राइट, ठीक है ना, वर्णा सिस्टम. और इसके अलग भी एक 5th पार्ट भी है इसका, इसको एक तरह से वर्णा सिस्टम से अलग रखते हैं हम लोग, राइट, ठीक है ना. दैट इज व्हाट अवर्ण कह सकते हैं, राइट. दैट इज व्हाट 5th वन इज व्हाट यू कैन से, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट शेड्यूल कास्ट, दैट इज व्हाट दलित. They were outside the caste system, right, or varna system. Better use varna system, right? Okay. So scheduled caste dalit, they are outside of caste system. So you can say they are what? 5th. Okay. Dalit, scheduled caste, और इसी यही थे, they were what? Untouchables, right? So they were what? Untouchables. Is it mentioned in NCERT? Yes, it is mentioned in NCERT. So the question can come on the basis of this, right? Okay. So there is a caste and politics, right? We are living in UP, so हमसे अच्छा कौन जान सकता है, राइट, ठीक है ना, कि कास्ट पॉलिटिक्स क्या होता है, राइट. एनीवे, यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक तो वर्णा सिस्टम तुम्हें पता होना चाहिए. कहाँ पे है मैं दिखाता हूँ तुम्हें लिखना, और उससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट. एंड एक कास्ट तुम्हारा क्या था? दलित, अनटचेबल्स, दैट इज व्हाट SC. ओके. एक ST भी होता है, ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो बेसिकली व्हाट कट ऑफ हैं, मतलब जो नॉर्मल पॉपुलेशन से कट ऑफ है, जो ट्राइब्स जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, दैट इज व्हाट ST. So Dalit को ही Harijan word basically what it was popularized by Mr. Gandhi, right? Okay. Though nowadays Harijan word is not, Supreme Court say that it is what derogatory, and we must not use the word Harijan in today's. So we don't use the word Harijan for scheduled caste. We use scheduled caste, right? Or we use Dalit, right? Okay. So पढ़ लेना again. जस्ट फॉर योर रेफरेंस, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट. ओके. अगेन जो मैं छोड़ रहा हूँ वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉलो NCERT. नाउ यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है. सो यू सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट. सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया, राइट. तो अगर सोशल एंड रिलीजियस, सबसे पहले रिलीजियस देखते हैं, तो एक कॉमन नोशन है. अ नोशन इज व्हाट कि द पॉपुलेशन इन मुस्लिम्स आर व्हाट दे आर इंक्रीजिंग, राइट. ओके. एंड दे आर इंक्रीजिंग, सो द डेमोग्राफी चेंजिंग, राइट. एंड इफ द डेमोग्राफी चेंजिंग, प्रोबेबिलिटी इज देयर that what after some time in India what will happen, right, the Muslims will become what in majority, right, and that will be a threat to what Hindu community, right. So there is a line that is written in NCERT. There was a report that was given by such a committee, right. So ये line देख लो, इस line पे एक question बन सकता है. तो I don't think this question will be asked because it will be a little controversial type, so they will ignore. But again, you should know because it is written in NCERT, right. Expert estimates done for the Prime Minister High Level Committee, popularly known as such a committee, right, so that the proportion of the Muslim is expected to go up a little, right, by about 3 to 4% in the next 50 years. It proves that in overall terms, the population balance of different religious group is not likely to change in a big way. So that means what? The population growth in Muslims are not threat to what Hindu community. That is what as per the report of what such a committee, right. तो ये आप ध्यान में रखिएगा. Okay. Now, in percentage terms, the population of Hindus, Jains and Christians has declined. और किनका बढ़ा है? तो Muslim, Sikhs and Buddhist population has what? Increased slightly, right? Okay. तो ये 2 पॉइंट है. These are important points. इससे एक फ्रेम की क्वेश्चन आपका किया जा सकता है. Next.
द सेम इज ट्रू फॉर द मेजर कास्ट ग्रुप ऑल्सो। तो यहीं पे एक लाइन है जिस लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, सुनना ध्यान से इसको, राइट। द सेंसस ऑफ इंडिया काउंट्स टू सोशल ग्रुप्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Both these broad groups include hundred of castes or tribes whose names are listed in an official schedule, and that's why the name is what, scheduled caste and scheduled tribe. Hence the prefix schedule. The scheduled caste, commonly known as Dalits, include those that were previously regarded as outcast. That means they were not the part of Varna system, right? Okay. In the Hindu social order and were subjected to exclusion and untouchability. Right? The scheduled tribes, often referred to as Adivasis, include those communities that led to secluded life, usually in hills and forests, and did not interact much with the rest of the society. और इन 2001 अगर तुम देखोगे तो 2001 में शेड्यूल कास्ट वेर व्हाट 16.2% एंड दिस इज व्हाट योर 8.2%, राइट। And even if you see the reservation, 15% for scheduled caste and 7.5% for what, scheduled tribes, right? तो इस तरह से भी याद रख सकते हो कि रिजर्वेशन तो याद होगा, आई एम श्योर कि कितना रिजर्वेशन है। जैसे ओबीसी को 27% है, राइट, ईडब्ल्यूएस 10% है, एससी 15% है एंड 7.5 इज व्हाट योर एसटी। तो एससी और एसटी का जो पॉपुलेशन है और जो रिजर्वेशन है, दे आर व्हाट मोर और लेस सेम, राइट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हो इस तरह से, ओके। और दिस इज व्हाट 2001 का डाटा दिया हुआ है। मैंने बाद का भी डाटा डाल दिया है इसमें, जैसे 2011 का भी डाटा डाल दिया है, तो एक बार डाटा देख लेना, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, राइट। सॉरी। नाउ ऑन दिस पेज इन एनसीईआरटी देयर इज अ वर्ड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, राइट। तो ये वर्ड उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिकॉज एनसीईआरटी हैजंट एक्सप्लेन दैट, राइट। और स्टेज 2 में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे उन्होंने वर्ड उठा के क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे प्रेशर ग्रुप वाला एग्जाम्पल याद रखो, राइट, हमने किया था प्रेशर ग्रुप वाला क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है वहाँ पे, बट तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, देखो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर कास्ट, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। जैसे एक वाल्मीकि समुदाय है, राइट, वाल्मीकि कास्ट है, राइट। तो उनका जो काम होता है बेसिकली व्हाट, दे आर मोर इन्वॉल्व इन व्हाट, यू नो, दिस क्लीनिंग ऑफ व्हाट टॉयलेट्स लाइक दैट, राइट। सो देयर परसेंटेज इज़ वेरी हाई, राइट। तो अगर कोई वाल्मीकि समुदाय से अगर कोई, मान लो कि कोई बंदा है, राइट, और कोई बंदी है मतलब, और अगर वो मान लो कि अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहे, राइट, सो इज इट ईजी फॉर देम और इज इट डिफिकल्ट फॉर देम? सो इट्स रिलेटिवली डिफिकल्ट। इफ इट इज डिफिकल्ट, दैट मीन्स ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इज व्हाट, लो, राइट। एंड इफ इट इज ईजी, so then we can say that occupational mobility is what, high, right? Okay, so I have given you a data. You see, in India occupational mobility is not that high, though it is changing, there is no doubt about that. That NCERT also says ki growth of literacy and education, growth in what, occupational mobility, that means what, a person who is coming from the lower caste, they can also what, you know, they can what, aspire for a higher job, right? Okay, or they can change their profession, right? And the weakening of the position of landlords in the village, the old notion of caste hierarchy are breaking down, but it's still prevalent in Indian society. I'm giving you one fact. You see, in the caste based society, it is mainly the Dalits who work as what, sanitation workers, right? ठीक है ना, as manual scavengers। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, मैनुअल स्केवेंजिंग की वजह से क्या हो जाएगा, डेथ हो जाती है, वहाँ पे जो गैसेस निकलते हैं बहुत ही मतलब कि जो लीथल गैसेस होते हैं, राइट, ठीक है ना, and because of that people die, okay। So that is what, cleaners of drains, as garbage collectors and sweepers of roads. It was estimated in 2019 that between 40 to 60% of the 6 million households of Dalit subcaste are engaged in what, sanitation work. So most of the people from this particular they are engaged in what, sanitation work. So that means what, that for them you can say that occupational mobility is what, मतलब उनके पापा उनके दादा भी वही कर रहे थे, उनके पापा भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, शायद उनके बच्चे भी वही करें। That means for them occupational mobility is what, it's very less, right? Okay, one more term, no parliamentary constituency in the country has a clean majority of one single caste। तो ये भी एक लाइन ध्यान में रखिएगा। इसके बेस पे ये एनसीईआरटी बोलती है कि इसका मतलब है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो आउटराइटली एक पर्टिकुलर कास्ट का अपीजमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर उनको जीतना है तो इसका मतलब दे नीड द सपोर्ट फ्रॉम अदर कास्ट ऑल्सो, राइट। ओके, सो दैट इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी, राइट। ओके, दैट मीन्स कि
आप पर्टिकुलर कास्ट को ही अपीज मत करो, एंड यू टेक केयर ऑफ द कंसर्न्स ऑफ ऑल अदर कास्ट इज ऑल्सो, राइट, नॉट अ पर्टिकुलर कास्ट, राइट. Now we'll do some of the questions and we will end the chapter, right? Okay. So when we speak of gender divisions, we usually refer to, बताओ. I can't see your response. Sorry, I don't know what's the reason. Maybe तुम्हारा नीचे आ रहा होगा. एक बार उसको वो करना ना, delete करना. I can't see your response. Shanvi saying B. Alice is saying B. Yes. Biological difference between men and women, no, that's not gender division, right? Gender division is the unequal roles assigned by the society to men and women, right? Okay. Yes, B is the most correct answer. In India, seats are reserved for women in Lok Sabha. This is very important question, very very important. ये आपके स्टेज 1 में भी आ सकता है, स्टेज 2 में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, राइट, ठीक है ना. इनफैक्ट आया भी है. सो इट इज व्हाट PRI is, right? Okay. And how much reserved? So at least what? 33%. This at least word is very important because in some of the state like Bihar, the reservation is what, up to 50% also, right? ठीक है ना. So that the word at least is important. ये याद रखिएगा. This question is very important. Consider the following statement on the meaning of communal politics. Communal politics is based on the belief that one religion is superior to that of others. People belonging to different religion can live together happily. Funny. Followers of a particular religion constitute one community. State power cannot be used to establish the domination of one religious group over others. Ishanvi saying A, right? Answer will be A, right? Okay. So one religion is superior to that of others. यही तो है communalism का actually, right? Okay. And because of that, the conflict is there, right? Superiority का. Which among the following statement about Indian Constitution is wrong, right? So prohibits discrimination on grounds of religion, yes. Gives official state to one religion, no. India is a secular state, right? So answer will be what here? B. Okay. Social division based on, so it is what, caste, are peculiar to India. It's very unique to India, right? Social divisions based on what, caste. Okay. Next. This was the last question and बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं as such, right? तो a person who believes in equal rights and opportunities for men and women, right? So they are what? Feminist. Okay. तो feminist मतलब फर्स्ट का B होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन हटा दो. A person who says that religion is the principal basis of community, right? So it is what, communalist, right? Yes. So answer will be what, B, A. तो एक ही ऑप्शन मतलब B हो जाएगा, बाकी दो देख सकते हो. Okay. Yes, Alice, right, correct. Thanks for the response. So this is done. देखो एक दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसके सारे MCQs और ये सब मैं इसी में डाल के तुम्हें दे दूंगा. ये तो मैं आज ही शेयर कर दूंगा, उसका वो भी शेयर कर दूंगा. Polity is more or less over. इतना कर जाओ, more than sufficient है, right? ठीक है ना. That will be sufficient and then now you focus on other subjects, right? Okay. So this ends your polity. जो बचा हुआ है उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकाल के मैं डाल दूंगा, उसको एक बार सॉल्व कर लेना. In case if you have any doubt, we can meet for a doubt session also, right? You have to just raise it and we will meet for that, right? Okay. Otherwise, your polity section is over. इतना काफ़ी होगा, इतना कर जाओ. And that is for both stages I'm telling, stage 1 and stage 2 also, right? So we'll end the class here. Thank you so much for and all the best for your NTSE exam, right?